Good morning, students. Before starting today's session, we are going to complete traditional rules and modern rules. Very good. Traditional rules. Debit the debtor, credit the creditor, personal rule. Debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real debit what comes in, credit what goes out. Nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Asset shows debit balance, liability shows credit balance, expenses shows debit balance, income shows credit balance, capital shows credit balance. In partnership, in last session, we have completed section number 37 and joint life policy. Quickly, we will revise what is joint life policy. In joint life policy, it is divided in three parts. One is joint life policy treated as expenses, joint life policy treated as an asset, joint life policy treated as reserves. If you treat it as joint life policy expenses, whatever premium you have paid, it is transferred to P&L account. Suppose if joint life policy is treated as an asset, surrender value becomes asset value and remaining amount is transferred to P&L. And joint life policy reserve one extra entry than asset, P&L appropriation account debit to JLP reserves, and whatever balance in JLP reserves at the end, it is transferred to partners capital account. So JLP reserves is finally transferred to partners capital account. My friends, in case of section number 37, if you see here, if death occurs from the date of death up to the date of settlement, partners legal heir will get extra amount, that is a higher of capital at the rate of 6% per annum interest. Whatever final balance is on the date of death is calculated, and that balance is considered as the capital base, and on that interest at the rate of 6% is calculated, and or profit will be divided in capital sharing ratio. So capital sharing ratio is important, and whichever is higher, that you are going to pay to partners legal heir in case of settlement is not done on death day, and from the date of death up to the date of settlement you are going to calculate this amount. My friends, retirement problems and death problems are almost similar. Only in case of retirement you are getting surrender value, and in case of death you are getting policy amount. So that is the basic difference between two: surrender value versus policy amount. So surrender value in case of retirement, and in case of partnership, in case of death, it's called as policy amount. So remember, there is only one difference: surrender value versus policy amount. Say good morning in the comment section, every one of you. Good morning, good morning, good morning. Keshav Kotari ji, good morning. Gunjan Devi, Nidhi, Atharva, Dhwani, yes. Lakshita, beta, good morning. Sonali, Bhargavi, Bhumika, Rafiq, yes, beta. Good morning to all of you. Other students, good morning. निधि सिंह सर थोड़ा स्लो पढ़ा दीजिए बेटा. थोड़ा स्लो क्यों नहीं? बिकॉज ये रिवीजन थी. रिवीजन ये पिछले सेशन की होती है, और रिवीजन जब होती है तब मैं फास्ट ही पढ़ाता हूं, और रिवीजन को आपने कैप्चर नहीं किया, इसका मतलब फिर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है. आपने 2 दिन बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया, तो निधि आपको रिवीजन का सेशन समझ में आएगा तब जब आप मेरे प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे. तो निधि आपको बेहतरीन बनाना है खुद को. मुझे स्पीड डाउन मत करने लगाइए, पर आपको मेरे स्पीड तक आने की कोशिश कीजिए. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज अ सीए स्टूडेंट. चलो निधि, आई होप नेक्स्ट टाइम यू विल टेक केयर अबाउट दिस थिंग्स. आपको मैंने स्लो क्यों नहीं भी बताया? बिकॉज लास्ट सेशन में ऑलरेडी हमने ये कंप्लीट किया था बेटा निधि. चलिए, ओके. विभू पांडे को आज क्या हो गया बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. And in CS student life, there is nothing is going out, beta. Vibhu is only coming in. Correct है? चलो, लास्ट इलस्ट्रेशन कहां पे आके छोड़ दिया था मैंने आपको? सर, अगर एक पार्टनर रिटायर होगा और उसकी जगह न्यू पार्टनर एडमिट होगा, तो ओल्ड रेशो दिया है और न्यू रेशो दिया है. न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, उसके साथ सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे? बेटा, नए पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग ही होगा, ओल्ड पार्टनर छोड़ के जाएगा. गुड क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं. सो डोंट वरी बेटा. एकता तिवारी जी, आई थिंक मैंने एफजीके पे आके छोड़ दिया था आपको. एक ही मिनट. हाँ बेटा. गुड मॉर्निंग अंजना जी. चलिए,
ए कैटेगरी क्वेश्चंस में नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ एल एंड एडमिशन ऑफ हिज सन. ओके, 4 नंबर वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट का 4 करेंगे. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. KLM are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Beta, only working notes I am going to tell you. Only working notes. बाकी का तो यू आर इंटेलिजेंट गाइज बेटा, तो मुझे आपको क्या समझाना पड़ेगा. नाउ यू आर, yes, from tomorrow, very very important session, yeah, company accounts. So please make sure that you won't be late in the class, or second one, you will attend all sessions. So that is more important. Okay, so company accounts, I don't want a single session that you will miss out. ठीक है, चलो. KLM are sharing profit or losses in the ratio of 5:3:2. बेटा निधि हो गया ना नॉर्मल स्पीड अपने आप. L wanted to retire from the firm and 31st March 2020 and admit his son N in his place. So N को उसकी जगह पे हमने लेके आए हैं. Okay, next one. KLM reserves. Reserves के आगे आप लोग लिखोगे hidden adjustments. Hidden adjustment 5:3:2 सर. सो रिजर्व्स को कैसे बांटा जाएगा? 25,000. यस बेटा, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दुर्गा पूजा. बेटा नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, पर त्योहार हमारे लिए है नहीं, हमारे लिए सब एक जैसे हैं. So 25,000, 15,000 and 10,000 we are going to add. Okay sir. Okay, 25, 15, 10 added sir. On retirement of L, assets were revalued. ए भाऊ, वर्किंग नोट में आएगा नेसेसरी जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट एंड कैपिटल अकाउंट. सो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1. चलो एक काम करते, इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे. वर्किंग नोट 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट, या यू कैन कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा हमेशा का. यस, कैलकुलेशन ऑफ gaining, losing and sacrificing ratio sir. Calculation of gaining, losing or sacrificing ratio. Write down particulars. KLM and old ratio 5/10, 3/10, 2/10. New ratio sir, new ratio. What is new ratio beta? New ratio, हाँ, new ratio. Yes, चलो find out कीजिए new ratio. New ratio is he is giving N को पूरा his share. L is retiring, so 5/10 dash his share will be 2/10 and 3/10. What is sacrificing ratio? Dash 3/10 giver, 3/10 dash either, 3/10 receiver. Okay, so N को मिला 3/10, L को मिला, L से गया 3/10. Okay, sir, clear sir, clear. Sacrificing ratio easy છે. Goodwill છે? Goodwill
was valued at 50,000. Goodwill was valued at 50,000. Working note 2, goodwill entry. 50,000 into, yes, each share, 3/10, 15,000. N's capital account debit to EL's capital, L's capital, N's capital. 15, 15, 15, 15. ये कौन आए? चलो, सो हियर L में मैं ऐड करूंगा 15,000, N में से माइनस करूंगा 15,000. ठीक है सर, गॉट द कॉन्सेप्ट. Then revaluation. Now it's a part of revaluation. Working note 3, revaluation account. Revaluation account. Today I want to check your patience. Today just want to check your patience. कितने students में patience है? ओके, सभी पार्टनर्स को गुडविल का पार्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में है क्या बाकी के पार्टनर्स ने जी, तो उनको कैसे मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं ना हम लोग. आपने प्रीवियस सेशन देखे क्या बेटा मेरे? फर्नीचर माइनस 10,000, 10,000. नहीं बेटा, एल पैसा लाएगा ना, और एन पैसा लाएगा, एल को पैसा देना पड़ेगा. सो एन में डेबिट, एल में क्रेडिट. अब ये बहुत बार हुआ है अर्शदीप. गुडविल का पैसा कौन लेके आएगा? न्यू पार्टनर. कौन लेके जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर. क्या कर रहे हो अर्शदीप? तू तो रेगुलर था लेक्चर में. बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर लेस हुआ है. टू फर्नीचर, नॉट बाय. 10,000. Asset reduce, liability increase, asset increase, liability decrease. Next, 2. Goodwill was valued. ये total goodwill है. We will calculate each share. Total goodwill is 50,000. गुडविल पे क्यों अटके आज बच्चे? भार्गवी तो रेगुलर है, पता नहीं क्या कर रही है. इन्वेंटरी 30,000 मीन्स 20,000 का लॉस होएगा. सो टोटल लॉस, प्रॉफिट नहीं है बेटा, लॉस है, लॉस. सही है मां? इट्स अ लॉस बेटा. टू इन्वेंटरी 20,000, 30,000 का लॉस. 40,000 का कैसे हुआ? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट KLM 15,000, 9,000, 6,000. Total is 30,000. 5:3:2. ओके, सो पार्टनर में से मिटा दो. But now what happens?
On admission of new partner, goodwill ठीक है. Now partners are being paid of their extra balances to keep the proportionate of n's capital as base. Beta, it is not total capital, only n's capital. So no need to open. You don't have to maintain cash balance here. So no need to open total column. Write down here. No need to open total column because you don't want to retain some capital as proportionate. You have to compulsory take n's capital as base. N's capital as base. So I will open capital account for you. Okay. So only capital account is important here. Capital account. Particulars. KLMN. Particulars. KLMN. Buy balance brought down. 40, 60, 30. Buy reserves. 25, 15, 10. 25, 15, 10. By अच्छा n's capital or l's capital credit by yes goodwill adjustment 15,000. 15,000 credit. 15,000 credit. N में 15,000 debit by n's capital to l's capital to revaluation loss. Revaluation loss कितना था बेटा? 15,906. 15,000, 9,000, 6,000. Now what happens? On admission of new partner, ठीक है, 50% of amount due to L was paid off and balance is retained in the firm as capital of N. Okay. So to bank, 50% into balancing figure. So take on calci. L को close कीजिए. 60 plus 15 plus 15, 90 minus 9, 81,000. 40,500. And to else, sorry, n's capital. Now this is important. And on the same line, by L's capital, 40,500. Now, on the last line, now this is very important, red pen. Red pen, to balance carried down. इसका कैपिटल नंबर 1 पे क्लोज किया. नंबर 1 पे एन्स कैपिटल 40,500 माइनस 15,000, 25,500.
हाउ मेनी शेयर बेटा? 25,500 में कितना शेयर? 5:2:3 for 3 chocolates. Number 2, 2 चॉकलेट के लिए कितना? 17,000. And for 5 chocolates, 42,500. Yes. Correct है? So new figures are 42,500 for K, L dash 17,000 for M, and for N it is 25,500. For N 25,500. Now cash balance, last one, to bank K and M's balancing figures. $65,000 minus 15 minus 42.5, 7,500. This is number 4. And what about this? I think it is tallied, ना? L तो tallied है, ये भी tallied है. 40,000, 60 और 30, 90. And what is the balancing figure of M beta? M का balancing figure कितलो छे? It is 40,500. Sorry. 40 minus 17 minus 6, 17,000. So here 17,000. Number 4. So cash balance में से कितना माइनस होगा? 7,500 and 17,000. 80,000 minus 75,000. Sorry, 7,500 minus 40,500 for, हाँ ये रहेगा ऐसा. देखो कितना बैलेंस आ रहा है. $15,000. एक सेकंड, 80 minus 40.5 minus 7.5 minus 17. हाँ, 15,000 I am getting balance of cash and bank. Trade receivable 50, ये आ गया. Reserve 0, 25.5 plus 42.5 plus 17 plus 20, 1,05,000. So tallied at 1,05,000. Yes. So capital account, make it proportionate, means what?
एंस कैपिटल को 3 लेंगे, 2, 5 एंड देन बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे 2 बैंक. सो दिस इज अ न्यू एडजस्टमेंट. दिस इज अ न्यू एडजस्टमेंट. आई होप यू गॉट दिस. करेक्ट है? यस प्रीतेश जी, यू आर करेक्ट बेटा. यस वेरी गुड, वेरी गुड. आज होमवर्क नहीं किया ना स्टूडेंट्स ने? मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स दे हैव नॉट डन योर होमवर्क बेटा. यस सीए स्टूडेंट्स 3 दिन दिए थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे मॉर्निंग, बट स्टिल दो स्टूडेंट्स यू हैव नॉट डन दी होमवर्क बेटा. ठीक है चलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यू विल अंडरस्टैंड इट आफ्टरवर्ड्स. आंखें तब खुलती है जब रिजल्ट्स आते हैं. नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. यस अदर स्टूडेंट्स. वेरी गुड बरकतुल्ला. So what is the new technique to you in this question? Can you tell me? चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ. When you solved and when I solved, what is the difference बेटा? Yes, tell me fast. What shortcut? मैंने क्या शॉर्टकट मारे? चलो जल्दी से बताओ, तब तक मैं पानी पीता हूँ. वेरी गुड सार्थक सेठ. व्हाट इज द डिफरेंस बेटा, जल्दी से मुझे बताओ. वेरी गुड बिबू पांडे. सेम टेक्निक. वेरी गुड. Numbering I have done beta. Numbering 25,500 is number 1. Then from that we calculated M and K's capital and then balancing figure is 2 bank. Numbering हमने किया. ठीक है बेटा. ईशान बेटा. केशव ठाकुर, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. केशव ठाकुर is saying sir almost I have taken 1 hour to complete this question. Beta, that is your investment. Don't think that you are taking 1 hour, 1.5 hour. Beta, now still 3 months are remaining and you are doing it for the first time. You are going to take some time. So don't worry about timings. Okay, timing तो आप लेने वाले हो, पर खुद का सॉल्विंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल्फ सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग then you can reduce your timing by doing practice, 2 to 3 times practice. Okay, और सेम क्वेश्चंस करने हैं, बार बार लगातार सेम क्वेश्चंस करने हैं. वेरी गुड. 1 hour इज ओके. दो स्टूडेंट्स और सही सर मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया था. ओके बेटा, ठीक है. श्रुति मुरे, वेरी गुड. चलिए बेटा, गुडविल बैलेंस शीट में से हमने हटा दिया है. इफ यू आर न्यू स्टडी मटेरियल देन यू डू नॉट हैव गुडविल इन द बैलेंस शीट. वी रिमूव इट बेटा. ओके, सो हम लोगों ने ये पूरा रिमूव कर दिया है. केशव ठाकुर, आपके जैसे स्टूडेंट्स भी जब हमें मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है ना. भले आपको फैकल्टी आप लिख रहे हो कि योर मोटिवेशन हेल्प्स अस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, इट्स ओके बेटा, बट आपके जैसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो पूरा सॉल्व करते हैं, अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, तो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी. दो स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग, बरकतुल्ला है,
अर्शदीप है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप स्टूडेंट्स अभी ग्रास्प कर रहे हो. एंड विदाउट नोइंग यूर फेसेस ये टीच करना इज वेरी डिफिकल्ट. फिर भी आई एम थैंकफुल टू आईसीआई कि ऐसा इनिशिएटिव आपके लिए उठाया उन्होंने. एटलीस्ट हम लोग एक माध्यम से कनेक्ट है, मैसेज के माध्यम से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो बेटा कोई बात नहीं, कभी पुणे मिलने आ जाना बेटा. ओके चलो. अच्छा, एकता तिवारी, टोटल कॉलम हमने क्यों नहीं बनाया बेटा? जो प्रॉब्लम था एफजीके का, एफजीके के कॉलम में हमें बैंक अकाउंट का बैलेंस रखना था. हमें किसी का बेस रख के नहीं करना था. बैंक अकाउंट का बैलेंस जो था, इफ यू रिमेंबर, वो 79,000 या समथिंग हमें रखना था. तो 79,000 रख के हमने जो किया था वो बैंक बैलेंस था. तो वो प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम में बेटा डिफरेंस है. ये प्रॉब्लम में किसी कैपिटल का बेस, तो उधर के उधर हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं. और जब आपको किसी का बेस रख के नहीं करना है, टोटल ही प्रोपोर्शनेट में चाहिए, टोटल ही प्रोपोर्शनेट में चाहिए, तब टोटल कॉलम बनाना. एफजीके वाला प्रॉब्लम. यस, ठीक है. नाउ डिफिकल्ट क्वेश्चन रिटायरमेंट में कुछ है नहीं. रिटायरमेंट वाले क्वेश्चंस तो है नहीं वैसे भी. अभी कौन सा ए कैटेगरी क्वेश्चन है? लेट्स फाइंड आउट. ए कैटेगरी क्वेश्चन, जस्ट फाइंड आउट. Only ninth one is now. Ninth one is difficult. Any other question that you are finding difficult, beta, other than ninth? Beta, now I am using only one method, that is sacrificing ratio, not raise plus write off method. So old videos में मैंने raise करना, write off करना ये सिखाया था, but now in new videos, in this batch, I only told you to use sacrificing ratio. Don't use, वो ज्यादा confusion हो जाता है, ये method use करो या वो method use करो. So only sacrificing ratio you have to use. गुनशिता जी. Okay. इलस्ट्रेशन 8 करवा देता हूं. 7 and 8 आर वेरी इजी एक्चुअली. ठीक है. चलो आज हमें जेएलपी पे भी जाना है. चलो फास्ट. जेएलपी. सेवन नंबर, फटाफट फटाफट. क्या हुआ? 7 नंबर. रेड व्हाइट ब्लैक shared profit and losses in the ratio of 5:3:2. They took out a joint life policy in 2016 for 50,000. कितना है बैलेंस बेटा? 50,000 is a balance. Premium 3,000 being paid. Surrender values are given. Black retires in 2020. So every year, if joint life policy account is not maintained, no, it means JLP treated as expenses. JLP treated as expenses. And in 2020, he will receive 3,600, and whatever amount he received, it is transferred in 5:3:2. So beta, same question.
If JLP is maintained, it means JLP is an asset. JLP is an asset. So 2 bank by P&L, 2 bank by P&L and balance carried down. So similarly, this question is very easy. 8 number. And whenever you are receiving JLP beta, buy bank and close that account by bank करके इतना याद रखो. So JLP in 2020 you will write by bank 3600. It's very simple question. It's very simple question. ILU 9, last illustration before break we are going to solve, and after that only death questions. So in death we have 4 questions which are difficult one that we are going to solve after break. Okay, आज थोड़ा सा extend करेंगे, थोड़ा सा, if you all agree. Okay, कल कंपनी अकाउंट्स है. ABC are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. एक सेकंड ना, सिर्फ में इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या देखने दो. TYK में नहीं, TYK में बेटा all are easy questions. You want index beta? You want index? Yes, take index. चलो take index बेटा. चलो yes, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट. इंडेक्स के स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए. एक सेकंड ना. Third number. Are you finding it easy beta now? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है. 4th, 5th, 6th. बेटा डू यू थिंक संकेत सर ने पार्टनरशिप इजी करके दिया आपको? आर यू गेटिंग कॉन्फिडेंस नाउ? सच में बोलो, मुझे एटलीस्ट ध्यान में आया क्योंकि ये डिफिकल्ट चैप्टर है. व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट पार्टनरशिप चैप्टर बेटा? मतलब आप खुद से पोस्टिंग करके आओगे ऐसा आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस? बेटा अभिनव कुमार, इलस्ट्रेशन 8 बहुत ही इजी है. फैजान, टाइम तो लगेगा ना बेटा. पार्टनरशिप के प्रॉब्लम्स बेटा आम इंसान नहीं सॉल्व कर सकता है, नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं. वही स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस रख सकते हैं जिनको ये समझ में आया है. मानवी खन्ना, ठीक है. इलस्ट्रेशन 8 सिर्फ मानवी के लिए मैं इलस्ट्रेशन 8 ले रहा हूं, मुझे उसको नाराज नहीं करना है. देख बेटा मानवी, ओनली फॉर यू. इलस्ट्रेशन 8 आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो बेटा, एज अ स्टूडेंट मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता हूं. देख बेटा मानवी, 5:3:2 रेशियो था. दे टुक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹50,000. नाउ जॉइंट लाइफ पॉलिसी कब मिलेगा? इन केस ऑफ डेथ. 3,000 being paid annually. The surrender value कब मिलता है? Other than death. Black retires, so surrender value is given बेटा. Now JLP कितना पे किया in the first year to bank? 3,000. But in 2016 बेटा your JLP balance is 0, so by balance carried down 0. So whatever you considered is in P&L, so P&L में भी 3,000 आएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 0 आएगा बेटा. अगेन यू पेड पॉलिसी अमाउंट, आपने मेरा सेशन पहले वाला देखा होगा तो 3,000. अभी आपको 2017 में कितना बैलेंस कैरिड डाउन बताना है मानवी? यू हैव टू शो 900. सो बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 2,100 विच विल बी इन द P&L. सी
नाउ दिस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आप वापस इधर लेके आओगे. यू पेड 3000. सरेंडर वैल्यू जो है वो आपकी कितनी दिखेगी तीसरे साल की 2000 2018 की. सो बैलेंसिंग फिगर इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो बैलेंसिंग फिगर अभी 900 प्लस 3000 माइनस 2000 तो 1900 इज अ बैलेंसिंग फिगर. देन अगेन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000. अगेन यू पेड प्रीमियम. अगेन यू रिकॉर्डेड सरेंडर वैल्यू बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड बैलेंसिंग फिगर इज P&L. बैलेंसिंग फिगर कैलसी पे निकाला तो वो आपका आया 1400. एंड नाउ इन नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 3600 एंड यू रिसीव्ड दिस अमाउंट 3600. तो बाय बैंक 3600. आई थिंक ये क्वेश्चंस अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं. मुझे याद है जब मैं पहले स्टडी मटेरियल देखता था पढ़ाता था एट दैट टाइम ऐसे क्वेश्चन थे भी नहीं. सो बोर्ड ऑफ स्टडीज के स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं अभी. सो यस ये पहले तो ये क्वेश्चंस थे भी नहीं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के. सिर्फ जेएलपी बस उतना लिख के छोड़ दिया जाता था. पर नाउ दे इंप्रूव्ड अ लॉट. Yes, Sakshi. Manvi, now it's easy. Manvi, now it's easy, beta. अभिनव बेटा तू होशियार है इसलिए तुझे नहीं बताया. ऐसा रोने का नहीं बेटा. ओके. यस. In illustration number 9, ABC are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. The balance sheet of the firm is given below. Capital, ABC bank, trade payable, sundry fixed asset, inventory, trade receivable, and see beta joint life policy is 20,000. What it means, it is JLP treated as an asset. Asset. Why asset? Because this is a surrender value. Why? Because JLP balance sheet में दिख रहा है. If JLP is shown in balance sheet, it means that JLP is treated as an asset. इतना याद रखिए. It's very simple that it is treated as an asset. On 1/1/2020, A wants to retire. Okay, retire हो जाइए. B and C will continue in the ratio of 2:1. So beta, old ratio is not equal to gaining losing ratio as new ratio is given. New ratio is given, therefore old is not equal to gaining losing ratio. बराबर छे? बराबर छे बेटा? Its surrender value, policy amount is 1 lakh and surrender value is 25,000. Okay, so 1 lakh to confuse us. 1 lakh कब मिलेगा? In case of death. हमारे लिए 25,000 मायने रखती है. For the purpose of A's retirement, goodwill was raised at rupees 1 lakh. Okay. So हमारा गुडविल हमने रेज किया और वो दे देंगे बाकी लोगों में. सन्ड्री फिक्स एसेट रिवैल्यूड एट 1,10,000. B and C did not prefer to show increase in the balance sheet. Oh, memorandum revaluation account, sir. Which account you have to open? Memorandum revaluation account. You don't want to show as an asset को दिखाना नहीं है. Also, they agreed to bring necessary to cash to discharge 50% of the A's claim and to make the balance 25,000 and make their capital proportionate. Sir, FGK.
एफजी के, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ जेएलपी उसमें ऐड हो गया। तो ये क्या है, इसमें एक याद रखना, टोटल कॉलम। यस, टेल मी, टोटल कॉलम ओपन और नॉट ओपन, इज ओपन और नॉट ओपन, टेल मी फास्ट। ओपन टोटल कॉलम, open total column. Yes. Why? Because now in this question, to make their capital proportionate, not by taking any capital as base, my friend. Base किसी का लेना नहीं है। ओके, चलो, हाउ टू सॉल्व बेटा? वेरी गुड। नो बेटा, वी विल नॉट डू रिवैल्यूएशन में गुडविल। Why they show goodwill? Because I already told you, memorandum revaluation account and goodwill are similar adjustments. Okay, so we will do it in our way, same adjustments. Working note 1, write down. Calculation of gaining losing ratio. Calculation of GL ratio. A, B, C. Old ratio. What is old ratio, beta? 5:3:2. What is new ratio? New ratio is 2:1. A retires, na? Multiply by 10, multiply by 3. 15 by 30, 9 by 30, 6 by 30, 10, 20 by 30, 10 by 30. Gaining losing ratio. 15 by 30, he is a giver. 11 by 30, he is a receiver. 4 by 30, he is a receiver. Correct છે? Working note 2. Goodwill entry. What is total goodwill? 1 lakh. इसका शेयर 8 शेयर, 1 lakh into 5 by 10, 50,000 क्रेडिट। B's capital debit, C's capital debit, in which ratio? 11:4. $36,667. $13,333 debit. Working note 3. Memorandum revaluation account.
Only one asset is increasing, na beta, 1,10,000. So 1,10,000 means it is increased by 30,000. 30,000 into 5 by 10. Each share 30,000 into 5 by 10, 15,000. Credit. And it is divided in two parts. B is capital, C is capital. 11 by 15, 4 by 15. So this is beta 11,000 debit, 4,000 debit. So credit by 15,000. So working note 3 over. Working note 4. Joint life policy treated as an asset. So what is the entry? Bank account debit. Bank account debit. How much you got, beta? 25,000. To JLP book value, 20,000. This is red pen adjustment. To A, 5 by 10. To B, 3 by 10. To C, 2 by 10. 2,500, 1,500, 1,000. 2,500, 1,500, 1,000. ठीक है? Now, I will write bank account and partners capital account. Particulars A, B, C. Total. Particulars ABC total. Particulars ABC total. I'm giving you 2 minutes to finish these adjustments. चलो बैंक अकाउंट एंड ये निकालो. चलो फटाफट बैंक अकाउंट और टोटल कॉलम बनाओ. चलो फटाफट. यू डू पोस्टिंग पार्ट फटाफट.
till now we have completed the posting part. I hope you completed till now. Bank account 10,000. Yes बेटा जल्दी जल्दी बताइए. Bank account. Yes. वॉइस मैंने जानबूझ के बंद रखा था बेटा. अभिनव जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 था, टू जेएलपी 25,000. जल्दी जल्दी पोस्टिंग कंप्लीट कर लीजिए. So buy balance brought down we have written, then goodwill adjustment we have finished, by joint life policy we have finished, and so memorandum revaluation account. So till now we have completed each and every part. Now numbering part. So who is going to retire beta? Who is going to retire? Mr. A. Okay. So Mr. A is going to retire and A's claim 50% हमें कैश में देना है. So first I will write to bank number 1 and to A's loan number 2. So bank and A's loan. Write down beta. What is the balancing figure of A's capital? चलो जल्दी से balancing figure निकालो. 50 plus 50 plus 15 plus 2.5. 1,17,500. 1,17,500 is the correct answer beta. Out of this divided by 2, 58,750. 58,750. बैंक में से मैं कम कर देगा by A's capital number 3 you can write 58,750, and number 4 on balance sheet liability side, on balance sheet liability side, A's loan 58,750, it's 0. 58,750. Next. By A's capital 58,750. Okay. Now you want to make, yes, this is number 4, huh, beta? Number 4, A's loan in balance sheet. Number 5, so you want by balance carried down कितना चाहिए आपको? By balance carried down कितना चाहिए? 25,000. Remaining part is same beta. This is just revision. 25,000. What is new in this? Joint life policy. And 2, B and C's capital. Okay, so B and C, we are not aware about individual. $83,750. $48,750. $48,750. So B and C is number 5. Now we will write it by bank number 6, 48,750, and we will close total column. Total column close कीजिए. 15 plus 5. 238,750. Number 6, 50 minus 15 minus 58.75 minus 58.75. So you left with 56,250. Correct है?
56 250. नंबर 7 it is divided in their new ratio 2:1. So into 3, 2 is equal to 37,500 and 1 is equal to 18,750. So I will write it. Number कितना था? 7. Number 7. Number 8. 37,500 and 18,750. And after that you are going to write nine number, close, sorry, not B, close B and C. You will get the total 7 plus 11,000 43,667 36,083 minus 31,000 5083. See the total. Yes, we are getting the same total. 48,750. Yes, I'm getting the same total. 43,667 and this is number 10. 43,667 and 5083. Yes, you can check all numberings. You want to take screenshot, you can take. Bank account. And then capital account, you can take a screenshot. All numberings together. 10 numbers are there, 10 numbers. So what is new in this question? Joint life policy. Sarthak is asking me, sir, how you can say the IMP adjustment by looking into beta experience. Experience matter करता है ना इतने सालों का. Experience matters beta. Capital account you can check numberings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So total 10 numbers you have to give. That is yes beta. Ahmed, very good beta. So there is a bank loan on the liability side. नहीं बेटा, बैंक लोन यू हैव टू कीप सेपरेटली. बैंक लोन बैंक दोनों साथ में मत लीजिए. यस, बैलेंस शीट टैली भी हो जाएगी आपकी. बैंक लोन 40 रखना, ट्रेड पेएबल 30, $80,000, inventory 50,000, 30,000, 0, and bank is 25,000. See your balance sheet tally figure. $37,500 plus 18,750 plus 40,000. $1,85,000 is a total. And asset side 50, 30, 80 plus 50 plus 30, 80, 80, 1,60,000, 1,85,000. Yes, tally.
1,85,000, 1,85,000. इजी है। चलो एक 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। नो बेटा संयम, इट्स नॉट पॉसिबल नाउ, यू कैन वॉच माई सेशन वंस अगेन। मुझे बहुत सारे डेथ के क्वेश्चन लेने हैं, कुछ नहीं है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड बैंक अकाउंट का एफजी के जैसा ही सॉल्विंग था, फिर भी मैंने 30 मिनट्स आपको दिए। आई हैव गिवन यू प्रॉपर टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेटा संयम, नाउ इट्स योर ड्यूटी टू डू दिस। सर जेएलपी कैन बी इन रिवैल्यूएशन? नो सर, आप जेएलपी को रिवैल्यूएशन में मत लीजिए। लेना है तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, जेएलपी को मत बिल्कुल भी। इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में तो नहीं आएगा, तो जेएलपी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में नहीं आता है। सर कैन वी रिवैल्यू जेएलपी इन रिवैल्यूएशन? नहीं बता दिया मैंने। इजी है सर, यस। बस अभी संयम में हर क्वेश्चन 10-10 बार लोग पूछेंगे, ये बताओ वो बताओ, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो आप प्लीज, अभी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, सिमिलर टू एफजी के क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा खुद से भी करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट एवरीथिंग यू विल गेट इन द स्पून फीडिंग। ओके चलो, सो विल टेक अ ब्रेक। 12:11 हुए, 12:21 तक का ब्रेक होगा एंड वी विल कम बैक एट 12:21। थैंक यू। ब्रेक ले लीजिए।
let's start with question number 1. Now, death questions are really tricky as compared to retirement questions. Once you got the adjustments, it's very simple. So, death के questions में A category के 3 questions है, and जितना हो सकता है उतना मैं लेता हूं. Otherwise, I will provide you 2 recorded sessions for A plus category question, because question number 1 is really important for death. थोड़ा सा मुश्किल है. चले, so let's start. Illustration number 1. I think retirement is easy and death थोड़ा सा difficult जाएगा. चलो 1 मिनट, मैं क्वेरी लिंक ओपन कर लेता हूं. चलिए, welcome back. The following was the balance sheet of Oman company in which XYZ were partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2:2. अभी आवाज आ रहा है क्या मेरा? आवाज आ रहा है ना मेरा अभी? Mr. Z died on 31st December. Oh. So 31st December, that is, here you can write after 9 months. After 9 months, his account has to be settled on the following terms. Okay. So general reserve के आगे क्या लिखोगे? Hidden adjustment 1:2:2. Okay. Goodwill is to be calculated at the rate of 2 years of purchase of average profits of 3 years. So average 3 years into 2 years of purchase. The profits and losses given below 30, 20 minus 10. 50 minus 10 beta. This is 40,000. But wait. Profit for the period from 1/4/2019 to 31st December 2019 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit of losses of preceding 3 years. So preceding 3 years का average profit निकाल के उसको हमें खत्म करना है. During the year ended 31st March 2019, a car costing 40,000 was purchased on 1/4/2018 and debited to traveling expense account, of which depreciation is to be calculated 20% per annum on written down value method. Okay. So 20% written down value method पे है. The assets एक मिनट. Okay, sorry. ये जो है, yes, during the year ending 31st March 2019, a car purchase 40,000 on 1/4/2018 debited to traveling expense account, on which depreciation is calculated at the rate of 20%. So this is the important adjustment in this question. So we have to rectify our profits. Rectify करना पड़ेगा अपना profit, इतना याद रखिए. Traveling expense को हमने debit दे दिया. Other assets and values. तो यहाँ पे important question क्या क्या है? सबसे पहले तो rectification entry. So working note 1. New ratio is given in the question or not given? New ratio is given. Prepare revaluation accounts that other assets and liabilities remain the same. Prepare partners capital account. Okay. बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट ना मेमोरेंडम नहीं ओपन करना है. अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेम बोला है. सो रिवैल्यू छोड़ के तो सबसे पहले तो न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, therefore old is equal to gaining losing ratio. Old is equal to gaining losing ratio, that is 1:2. New ratio, write down, new ratio is not given. New ratio is not given. Working note 1. Gaining losing ratio
sorry, goodwill adjustment now, because goodwill gaining losing ratio you don't have to calculate in this question as new ratio is not given. Goodwill share, सबसे पहले for goodwill is equal to goodwill share, total goodwill is equal to average profit of 3 years into number of years of purchase. Average profit of 3 years into number of years of purchase, 2 years. And for average profit we need step number 1. Correct? So after 2 lines, step 1, average profit, beta, you have to consider for 2017, 31st March 17 beta, minus 10,000, 31st March 18, 20,000, 31st March 2019, wait, 30,000, but one car is purchased, transferred to 40,000 was purchased on 1/4/18, debited to traveling account. So 30,000 plus 40,000, because depreciation उसमें add हो जाएगा. Sorry, ये add back किया. Now see, capex is treated as revex. So revenue expenditure treat किया था 40,000. So now it is capital expenditure. So we have to increase our profit and we have to decrease it by depreciation amount. So depreciation is 20% on WDV. So depreciation आपको less करना है. So 30,000 plus 40,000 minus 8,000. So what is your new profit? New profit is 62,000. नया profit कितना आएगा आपका? 62,000. कितना आएगा? 62,000. So this is red pen adjustment. Traveling expense, now motor car. तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने कम किया, एक्सपेंडिचर कम किया, you reduce your expenditure means your profit will get increased and depreciation is going to deduct because depreciation will reduce your profit. Okay, so please no need of rectification entry. Now you understood it very clearly. Now you are pro level students, you are not like basic 11-12 standard students. So you can visualize that your expenditure is treated as an, now it is treated as an asset. So expenditure reduce means profit will get increased. So red pen adjustment. So what is your average profit beta? Average is 30, 62, 82 minus 10, 72,000. So 72,000 divided by 3. So what is your profit beta? 24,000. 48,000 working note 1. Goodwill share. Working note 1, goodwill share. 48,000. Working note 2. Working note 2. Z sharing profit from 1st April to 31st December. Oh, sorry. 72,000 I am getting the, sorry, 48,000 is a goodwill and his share. Goodwill share of Z is equal to 48,000 into 2 by 5. This is 19,200. Correct ना? 48,000 divided by 5 into 2. मुझे जितना याद है, हाँ, 19,200. His capital is credited and X debit, Y debit. One by 3, 2 by 3.
6,400 and 2 is equal to 12,800. X debit, Y debit to Z's capital. $12,800. Goodwill share, working note 2. Working note 2. Z's share in profit 9 months. Z's share in profit 9 months. Average profit of 3 years into 9 by 12 into Z's share. Why 9 months beta? He died on 31st December. So 1st April to 31st December, we have to calculate average profit of 3 years. 72,000 divided by 3, that is into 9 by 12 into 2 by 5. 7,200. And what is the entry? Now this is red pen entry. P&L suspense account debit to Z's capital. See, this is very, very important entry because you are not exactly aware about the profits. See, now this is very important entry. You are not exactly aware about the profits. You are not exactly aware about profits. And whenever you are not exactly aware about profits, remember, you will calculate profit based on past years. Are 31st December, you are not, see, he died on. Now this is a very new concept. In retirement, there is no concept of P&L suspense. Understand why it is P&L suspense. So now please be focused. Now next 5 minutes, please understand the explanation. What is P&L suspense? What is P&L suspense? Understand it. See beta, we are not exactly aware about profits which are based on 9 months. Okay. Because you are not going to close your books of accounts on 1st April to 31st December. So till that time, you are finding profit based on past years. You are finding profit based on past years. And when you are calculating profit based on past years and you are giving share to Z, then Z capital is getting increased. But whether it is exactly net profit of the year, no sir. And therefore, it is not exact share of the profit. And therefore, if it is not the exact share of profit, P&L suspense account is debited. एक बार हिंदी में जब हम लोगों को Z को जब मर रहा है, Z मर रहा है, तो हमें एग्जैक्ट हम लोग क्या P&L बनाएंगे क्या? Z कभी भी मरेगा तो हम लोग क्या P&L तैयार करें क्या उसके लिए? कोई भी पार्टनर मरता है तो हम लोग उसके लिए P&L सेपरेटली नहीं बना सकते. तो हम लोग क्या करते हैं भाई, तुझे प्रॉफिट, अभी वो क्या बोलेगा उसका लीगल एयर तो ये 9 महीना तो जिंदा था, उसके प्रॉफिट का क्या सर? तो उसके प्रॉफिट का क्या? तो वो 9 महीना जो जिंदा था उसके प्रॉफिट का क्या? तो उसके लिए आप पास्ट में जाके अपने प्रॉफिट निकाला. उसको बोला देख पास्ट में हम लोग जो कमाते थे उसमें कितना प्रॉफिट बनता था? 24,000 एवरेज प्रॉफिट लेंगे हम. 24,000 में कितने महीने? ये पूरे साल का था 24,000. अभी वो कितने महीने था हमारे साथ? 9 महीने. सॉरी, अप्रैल टू दिसंबर वो हमारे साथ था. 9 महीने का प्रॉफिट उसको मिलेगा. पूरा मिलेगा क्या? नहीं भाई, उसका शेयर मिलेगा ना, वो तो 2/5 था. तो 7,200. सर अभी क्या हुआ? तो 7,200 हम लोग देने को राजी है. प्रॉफिट देते हैं ना हम लोग, क्या नहीं बोल रहे? हम क्यों नहीं बोले उसको प्रॉफिट देने को? तो हम लोग उसको एग्जैक्ट प्रॉफिट तो निकाल नहीं रहे. अभी एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, पीछे जाके निकाल रहे, तो हम लोग नेट प्रॉफिट को तो डेबिट नहीं दे सकते. अभी ये प्रॉफिट कैसे निकाला ये हमें पता नहीं है. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, साल के एंड में एज्यूम करो 15,000 प्रॉफिट आया, या एज्यूम करो 25,000 प्रॉफिट आया. 25,000 में से इसको कितना दे दिया? 7,200. कितने महीने के हिसाब से? 9 महीने के हिसाब से वो हमने कैलकुलेट कर दिया. जो भी बचेगा वो कौन शेयर करेगा? जो भी बचेगा वो एक्स एंड वाई शेयर कर लेंगे. कौन से रेशो में? उनके नए रेशो में जो भी बचेगा. सो दिस इज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. दैट विल अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ 31st मार्च. 25,000, 25,000.
Out of that, 7,200 already given because now he is no more here in our business. 9 months का calculation करके दे दिया, P&L suspense debited. Now it is cancelled. That P&L suspense balance is cancelled, and whatever balance when on 31st of March. So on 31st of March, you are going to find out profit. You will deduct 7,200 and whatever remaining balance, you will divide it in the X and Y. Now you are getting the concept or not, tell me in the comment section. अभी आपको क्या नहीं समझा? So what is P&L suspense? Why suspense? P&L suspense because it is not exact amount. It is not exact amount, and when we can't find out exact amount, it is called as P&L suspense. P&L suspense to Z's capital account. Okay, चलो जल्दी से मुझे बताइए what is the concept of P&L suspense? What is the concept of P&L suspense? Why it is called as P&L suspense? Yes, tell me. चलो जल्दी से बताओ P&L suspense क्यों बोला जाता है इसको? चलो 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 जल्दी 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 tell me it in the comment section. Sir, can you please provide accounts important questions of ICI material RTP MTP? Beta already provided. RTP MTP you have to solve it for last 3 to 4 years. We can do the quality questions which will help me will help for lakhs of CA foundation students, no doubt beta. And through this our passing percentage can be increased in the competition. Yes बेटा, अब तो increase होने ही वाला है. ईयर के एंड में लॉस हो गया तो भी उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा. अभी हो गया तो हो गया. 9 महीने का प्रॉफिट बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर्स. जुबान दे दी बेटा, जुबा केसरी याद रखना. तो यस एकता तिवारी जी, यदि एंड में आपको लॉस हो गया, जुबान दे दी थी, उसको 9 मंथ्स का प्रॉफिट दे दिया तो दे दिया. अभी हमने उसको नाराज नहीं करना है. मरे हुए इंसान का प्रॉफिट लेके क्या करेंगे? एंड में लॉस हुआ तो लॉस हुआ, अभी कुछ नहीं कर सकते उसमें. एकता तिवारी जी, P&L suspense is not accurate profit. Yes, beta. Bhargavi, very good, very good. Because sir, it is not exact value. Yes, very good, beta. Yash Gupta, Ishan. When we are not assured about the exact amount of P&L, so P&L suspense account is open. Very good. Yes, Sarthak ने भी भेजा हुआ है. Sir, when there is estimated profit that we have to open P&L suspense and if profits are already given. No, beta. P&L adjustment is different. P&L adjustment means when we are rectifying our profits, it is P&L adjustment. So आपके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है. Sir, concept clear, but what will be happen if there is a loss? तो बीबू पांडे मैंने आपको already बता दिया. जुबान दी है तो देना तो पड़ेगा. Because it is not the actual profit, Bharatullah is saying it is estimated profit, then we use the profit and loss suspense account. Very good, because it is based on the and Pratidnya Vidhate, WRO students. Very good, beta. Pratidnya ji, Jia Patel, because it's not the exact profit, so we can't open P&L account. Very good. Now your concepts are 100% clear. Remaining adjustment you can do by your own. So what is new concept here, beta? One is goodwill. Goodwill में rectification is there. And second one is revaluation and partners capital is now very easy. So do adjustments are important. Revaluation का profit आप लोग divide कर देना. And here no capital base is keeping as base वगैरह कुछ भी नहीं है. So remaining adjustment you can do by your own revaluation account and partners capital account. So what is new in this question? P&L suspense account. P&L suspense when to open? When you are not aware about your profits and when you want to settle. Beta section 37 is applicable after P&L suspense. Section 37 कब apply होगा? Section 37 is after P&L adjustment. This is P&L suspense is till the date of death. See, P&L suspense जो होता है वो till the date of death है, till death day. Okay, and P&L suspense के बाद Section 37 शुरू होएगा. मरने के बाद Section 37, whichever is higher. तो यहाँ पे तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नॉट कैपिटल शेयरिंग रेशियो. सो P&L सस्पेंस अकाउंट ये मरने के पहले के प्रॉफिट्स का है. इट इज बिफोर डेथ. This P&L suspense, and after that then section 37 is applicable. Okay, got the concept? Yes, my dear students, are you getting it? बिबू ऑलरेडी बता दिया लॉस का क्या करेगा. सर्च पिट कोर मुझे कुछ भी नहीं समझा आपको क्या भेजना था. यस बड़ा सही है. मैं जितना मन करेगा उतना मैं क्लास लेगा अभी आज. ओके, सो प्लीज आप बार बार ये क्वेश्चन मत पूछे, तो लेने दीजिए, क्योंकि आज का सेशन इज इंपॉर्टेंट वन जितना हो सकता है. फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं तो आई विल गिव इट इन द रिकॉर्डिंग फॉर्म. चलो अभी इलस्ट्रेशन 1 तो हो गएगा. टीवाई के 1 एक बार कर लेते हैं. टीवाई के 1, TYK1. In TYK1, you have several life policy. That's why I'm taking that section. So last question,
TY के 1. बाकी के क्वेश्चंस इफ यू फाइंड इट्स डिफिकल्ट तो मुझे नेक्स्ट सेशन में बता दीजिए, इफ आई से परमिट्स मी. Hey beta, first question is easy, second question is difficult. Second question, Peter, Paul and Prince. Peter, Paul and Prince, A++ category question. A++, sir, A++. A++ category question. Now, very, very important question of whole partnership beta, Peter, Paul and Prince. I will try my best to finish this question, and suppose if time doesn't permit me and if you find some questions which are difficult one, so I will provide you recorded one. Okay. अभिनव कुमार बोल रहे जूम पे क्लास ले लीजिए बेटा. यस, देखते हैं. चलो रेडी हो जाओ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए. आई नो you guys are never giving up. चलो 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 फास्ट. लास्ट क्वेश्चन. सर ये टू डिफिकल्ट है, हिमांशु पाठक बोल रहे हैं. यस बेटा, 31 मार्च को मर गया गोरलिन कोर तो फिर P&L सस्पेंस नहीं लेना है. वेरी गुड बेटा, फिर P&L ही फाइनल कर देंगे ना. वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल. यस, गुड थिंकिंग. गोरलिन कोर उसका बोलना है कि सर इफ समवन एक्सपायर्स ऑन, इफ डेथ इज ऑकर्ड ऑन 31st of March, then there is no need to calculate P&L suspense. You are finalizing your profit, so P&L को भी डेबिट दे सकते हो. It's very simple. चलो, Peter, Paul and Prince were sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Please have patience till last minute. Okay, because this question is really difficult. I'm making your mind very clear that this question you have to focus for next 30 minutes. और ये question आ गया ना, आप बहुत दुआएं दोगे. Okay, मेरा तिजोरी 10-10 लाख से रोज का बढ़ेगा, ये आप मुझे दुआएं दोगे. चलो, please be focused for this question. This is really tricky question. So yes, I'm making your mind first. So please. Yes. Okay. Peter, Paul and Prince. It was provided that partnership deed in the event of retirement or death, his legal representative would be paid. Okay, क्या paid है अभी देखो. सबसे पहले नंबर 1 कैपिटल बैलेंस. ओके, जो भी मरेगा उसका कैपिटल बैलेंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, रीड स्लोली दिस पार्टनरशिप प्रॉब्लम. ओके, सेकंड वन, व्हाट यू आर गोइंग टू पे. His share of profit, goodwill, 2 years of purchase of normal average profit. So goodwill is equal to 2 years multiplied by average profit after charging interest on capital for last 3 years to 31st December preceding the retirement death. अच्छा, preceding the retirement of death, उसका previous 31st December. So if death occurs on 31st December 31st Jan 2020, so you will consider 31st December of 2019. Okay, if death occurs on 31st March 21, so you will consider 31st December 2020, preceding December. Okay, ठीक है. So second one, goodwill share. Third one, his share of profits from the beginning of accounting year to the date of retirement or death, which shall be considered previous year's profit increased by 25%. So here you are estimating your profit. So beta, this is P&L suspense. This is P&L suspense till the date of death. We covered it in illustration number 1. Interest on capital
though payable to the partners, will not be payable in the year of death or retirement. So interest on fixed capital is not paid. It's given in the question. Not be payable in the year of death or retirement. All the assets are to be revalued on the basis of retirement or death, and the profits and losses be debited or credited to capital accounts in the profit sharing ratio. Yes. So profit sharing ratio में ये divide होगा. Okay. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा, इतना याद रखिए. नेक्स्ट वन. Peter died on 30th September 2019. Peter died on 30th September 2019. So up to 31st December 2018, you will consider the books 1st January to 31st December. The balance in fixed capital 10,000, 5,000 and Prince 5,000. Okay, sir. Okay. The balance in current account के balances. First one capital account, then current account. Drawings of Peter 10,000. Profits before charging interest on capital. 3 profits are given, and these profits includes abnormal items. Okay. Profit on sale of asset, deduct, and insurance claim is also deduct. Firm has joint life policy 1 lakh, and here several life policy. Now this is new concept. Several life policy is a new concept. 50,000. Wait, I will tell you. Don't worry. Several life policy I'm going to tell you. Don't worry. In P&L, 50,000. Okay. Premium is treated as expenses. So JLP is treated as P&L mein. So JLP is treated as expenses. Surrender value is 30% of the face value. Now this is important. Wait. I know policy amount is important, but this is important in several life policy. Now what is several? Individual. So individual life policy, we are doing it for the first time. Individual policy. So wait. On 30th June 2019, it is noticed that insurance company, that insurance premium in respect of fire policy had been undercharged. So undercharged in 2016, 18, 6,000 in the year 18. So beta 2018 के profit में से ये minus होगा. So unrecorded expenses, this is also very important. INP, unrecorded expenses, deduct it from P&L of 2018, and revaluation of assets of 20,000. Prepare the Peter's legal representative को कितना मिलेगा. So last one, calculate Peter's legal representative. कितना उसको मिलेगा. So write down. Yes, please write down. Very, very important question. What is it asked? Write down. Or red pen adjustment. Many adjustments are red pen adjustments. Here. Yes, write it. Peter's executor account. Peter's executor account. Now, I'm going to ask you some questions. So you have to write it in the comment section. फटाफट आपको comment में लिखना है. So this is very interactive question. You will answer me all my questions. Which balance बेटा? Peter executor को कौन सा balance होएगा? Particulars rupees. Yes, till that time you can type it. Which balance? Peter executor को. The balance in capital account. So beta he has credit balance. चलो फटाफट आंसर दीजिए.
Peter executor is a credit balance. Very good beta. Mohit, thank you beta. Buy balance brought down. Yes beta, रुको मैं बताता हूँ आपको. Don't worry beta. Yes, रुको मोहित जी रुको. Buy balance brought down. Sarthak said, sorry, रुको. Buy balance brought down 10,000. It's capital balance. 10,000 is a capital balance. Current account balance. By current account. By current account, 20,000. Okay. By current account, 20,000. Next. You can write by, sorry, not balance brought down. Sorry, by capital account. No, I'm sorry, beta. By capital account. Yes, you are correct, beta Bhumika. Very good. Then we have to write goodwill by goodwill share. Second one, we are not aware about the amount. So working note 1. By goodwill amount के बाद by P&L suspense. Working note 2. By revaluation. So by revaluation. By revaluation. And after that, one line. By insurance policy. Number 2, here, 2 drawings. 2 drawings, because his current account is showing drawings also. Drawings is 10,000. And remaining balance, we will find it out. So now this is your, yes, first you have to write it in this way. And then whatever balance, it will be 2 balance carried down. So 2 balance carried down will be the next amount. So Peter's executor account by capital, by current, by goodwill share, by P&L suspense, by revaluation, by insurance policy, 2 drawings, and remaining balance we are not aware, so that we will calculate it later. My friends, first one, what you have to calculate? Yes, goodwill adjustment. So write down. So till now it's clear, beta. Till now it's clear how to solve this. So whatever is given in the question, first I have written what you have to pay. तो अभी तक का कोई डिफिकल्टी है तो मुझे जल्दी से बताइए. Till now any difficulty? So I have just listed out. What you have to consider and what you don't have to consider. तो अभी तक कोई डिफिकल्टी है क्या बताओ? Okay. Working note 1. Working note 1. Goodwill share. Goodwill share is equal to 2/4 into goodwill amount. We are not aware about goodwill. So step number 1. No. Better P&L suspense, because we are going to share him profit also. I already explained you. His share of profit, we have to take it in the past previous year profit increased by 25%. That's why it is not based actual profit. So it is based on the P&L suspense. So 2/4
into goodwill amount. So I don't know exactly goodwill amount. So after 2 lines, step number 1. Step number 1, goodwill calculation. Step number 1. Goodwill is equal to average profit of last 3 years into 2 years of purchase. 2 years of purchase. Return beta, return. Okay. Average profit of last 3 years. Step number 2. And 2 years that you have to multiply. And step 2. Step 2. Average profit of last 3 years. Serial number. Serial number, particulars, computation, rupees. Roman 1. Total profits. Total profits beta, what are given? What is given profit? 1 lakh, 120, 150. $3,70,000 less abnormal profits, because this is not weighted average profit. So abnormal profits, you can take total also, no problem in that. Abnormal profit, profit on sale of assets, in that profit on sale of asset, and B, insurance claim. 5, 7, 10. 3 और 12. One more point, very very important, red pen, that it's time कि आप भूल सकते हो, you may forget this point. Less unrecorded expenditure, insurance premium given, unrecorded expenditure. It's very important point that you may forget this point while calculating profits. So unrecorded expenditure beta 6,000. Roman 4. Normal profit. One minus 2 minus 3. 370 minus 22 minus 15 minus 6, 3,27,000. Now average profit before interest on capital. Now this is before interest on capital, my friend. Roman 4 divided by 3. 1,09,000. See, unrecorded expenses, it's very simple. Total profits you have taken,
Abnormal profits you are going to deduct because abnormal profit increase your profit. Now you want normal profits, so deduct abnormal profits and add abnormal losses. Unrecorded expenditure we have to deduct. So normal profit we are getting average profit before interest on capital less interest on capital. Now less interest on capital. Interest on capital beta, it is 10%. Is given in the agreement 10%, but you don't have to pay it in the year of death. Okay, so interest on capital in last year we paid it. And what are their capital balances? 10, 5, 5, 10,000, 5,000, 5,000. 20,000 पे 10%, 2,000. So average profit after interest on capital 5 minus 6, 1,07,000. 1,07,000. Now this 1,07,000 you will consider here, and you are getting 2,14,000. Then 2,14,000 into 2 by 4. Again, you are getting 1,07,000. And this 1,07,000 we will write as goodwill share. So only 5 marks you got for goodwill. Yes. Clarity beta, question mein. Please try to solve it in my way. It will be easy for you. Weighted average profit hota to year wise calculation kya hota. Weighted average profit is not there, so we consider total profit. So total ले लिया and total हमने minus किया. ICI ने year wise किया है. I made it very simple. तो ICI study material में you got this year wise, and I am here. I am making a next presentation, simple presentation. Why? Because year wise calculation is required if there is weighted average profit. It is simple average, therefore no year wise calculation. Okay. So ICI के आंसर में आपको मिलेगा year wise, here आपको मिलेगा total wise. Till now clear beta? Please tell me it in comment section. Till now any difficulty? Yes, जल्दी से बताओ. मुझे पता है it's difficult. I know this difficult one. सर सीए कब होंगे? यदि डिफिकल्टी लेवल ही नहीं करना है तो हम लोग क्या इजी सॉल्व करेंगे क्या? हम लोग क्या 11-12 के स्टूडेंट्स है या बीकॉम वाले स्टूडेंट्स है? हमें तो डिफिकल्ट करने की आदत है. जितना डिफिकल्ट देते हैं देखो हम लोग ब्रेक करेंगे सर. यस, जो चाहे इंस्टीट्यूट आपको पूछे, हम लोगों का इतना दिमाग है कि हम लोग ये करके रहेंगे. बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, श्रुति मुळे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस साल डेथ हुआ उस साल नहीं पे करेंगे, पर पिछले साल तो पे किया है ना बेटा. पिछले साल पे किया है तो उतना प्रॉफिट डिडक्ट होगा गुडविल कैलकुलेशन में. पिछले साल में पे किया है. सार्थक सेट इज सेइंग टिल नाउ इट इज क्लियर लाइक वाटर. बेटा पुणे में बहुत आजकल अच्छा पानी नहीं आ रहा है. अर्शदीप बोल रहे नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. संजना बोल रही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इको यार. अभी देखो ये जो भी प्रॉफिट दिए हैं, ये वॉट एवर प्रॉफिट्स आर गिवन हियर, इट इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन ना बेटा. बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बैलेंस कितना है? 10%. 10% मतलब 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, 20%. 10% आपको देना है. सॉरी 10% आपको देना है. और जो साल में डेथ हुआ उस साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करना है. और नहीं पे करना है तो काय को पे करना है? दिया है ना क्लियरली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस साल पे नहीं करना है. पर पिछले सालों में तो पे किया ना हमने, और प्रॉफिट जो दिए वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा. ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग? इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है. इतने सिंपल कॉन्सेप्ट को क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो बेटा? यस. अरे भार्गवी 2-3 बार प्रैक्टिस भी काई को करने की, एक बार भी किया तो भी काफी है. See, in starting you can do practice 2 to 3 times, that admission और ये questions को. This problem one time practice and index भी read कर लिया बहुत है रे.
अरे सही है माँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लेना पिछले साल में लेना पड़ेगा। ये हम लोग गुडविल पिछले साल का निकाल रहे, पिछले साल का निकाल रहे। इस साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिखा क्या? इस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर भी इधर लिखा क्या क्रेडिट साइड में कि हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? अरे मर गया वो, नहीं देंगे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पिछले साल देंगे। आप क्यों उसके ऊपर ही अड़े हुए हो? पिछले साल के प्रॉफिट में से तो देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा तो। यार एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉसेस ये तो इजी करके दिया यार, इतना इजी करके भी आप लोग बोलते हो कि नहीं समझ में आ रहा है, तो इट्स डिफिकल्ट ना। थोड़ा तो इंप्रूव करो अपनी लेवल। और दिया हुआ है उधर क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डोंट पे इन द ईयर ऑफ डेट। पिछले साल तो पे किया ना भाई, पिछले साल क्यों नहीं पे करेंगे? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, थोड़ी सी लेवल इंप्रूव करो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आ जाएगा। यस, पूछो क्वेश्चंस, पर 3 बार मैं वही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से आप लोग डाल रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करें। भाई एक दिन में 2 घंटे में इतने बड़े बड़े सम्स, मुझे याद है हमारी फैकल्टी एक सम करने को 1.5 से 2 घंटे लेती थी। इधर आप मुझे एक इसमें 5-5 सम करने लगा रहे हो। फिर भी आप थोड़ा तो इंप्रूव करो यार लेवल, इतना टाइम नहीं है ना आपके पास है ना मेरे पास है। और सच में बोल रहा हूँ, 15-20 दिन ये टॉपिक में लेते बैठूंगा ना, आपको भी मजा नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। ये 7 दिन में ऐसा फटाफट है ना, मैगी अच्छी लगती है सबको, याद रखो। दाल चावल सब बनाना हेल्दी है, 20 दिन का कोर्स इजी हेल्दी रहेगा। पर बेटा आजकल सबको चाहिए शॉर्टकट्स, 7 दिन में मैगी चाहिए आपको। और मैगी चाहिए तो थोड़ी इंप्रूव भी करनी पड़ेगी ना लेवल। चलो कोई बात नहीं। वर्किंग नोट 2, पी एंड एल सस्पेंस। पी एंड एल सस्पेंस इज इक्वल टू, दैट इज शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट टिल डेथ, टिल डेथ। 9 महीने के बाद मरा, 30 सितंबर को मरा है। सो व्हाट इज द आंसर? पीटर शेयर इनटू एस्टिमेटेड प्रॉफिट। पीटर शेयर बेटा, मैगी हार्मफुल है मुझे भी पता है, पर आपको वही चाहिए ना आजकल। क्विक क्विक करवाओ, क्विक करवाओ सर, जल्दी जल्दी, हमें बैच खत्म करनी है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स टिल डेथ डिवाइड बाय 12। अच्छा है बीच में नहीं मरा, नहीं तो डेज से कैलकुलेशन करना पड़ता था। ये एक अच्छी बात होती है कि हमारा पार्टनर कभी भी 1 तारीख को मरता है, नहीं तो 30 तारीख को मरता है। पीटर शेयर 2/4, एस्टिमेटेड प्रॉफिट स्टेप 1। बेटा नो 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 नो, स्टेप 1 करना पड़ेगा। यू आर रॉन्ग बेटा, हिमांशु पाठक जी, यू आर रॉन्ग। 9/12। After 2 lines, write down step 1 for working note 2. Estimated profit for 2019. Estimated profit for 2019. Serial number, particulars, computation, rupees. Now you are not paying interest on capital in this year, हाँ बेटा। किसको? डिसीज पार्टनर को नहीं दोगे, बाकी दोनों को देना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोमन 1। Now very yes, many things in red pen. Which profit you are considering? Profit for 2018. Profit for 2018. See, before interest on capital is given. What is the profit for 2018 beta? Past year profit you are considering? 150। जान लगती है क्वेश्चन समझाने में। नेक्स्ट, लेस। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड पेन एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। अरे वो इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इंश्योरेंस प्रीमियम यू हैव टू डिडक्ट ना। इंश्योरेंस प्रीमियम वर नॉट डिडक्टेड इन 2018 का, सो नाउ इट इज रिकॉर्डेड। रेड पेन एडजस्टमेंट। सर कितना भूलना होगा, होना ही वाला है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। रोमन 3, एडजस्टेड प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड एज
Yes, rectified profit. So adjusted profit 1 minus 2, 1,44,000. Now estimated profit for 2019. For 2019 are increased by 25%. Roman 3 plus 25%. 144 plus 25%. 1,80,000. Roman 5. Now less. Very, very important. Now this is before interest on capital. And now very important. So interest on capital. Wait. So we don't have to deduct. Kiska? Peter का? Only two. ये बाकी के दो क्या नाम है इनके? Paul and Prince. Only two Paul and Prince. Paul and Prince को तो देना पड़ेगा ना भाई. Don't pay to Peter. Don't pay to Peter, but please pay to Paul and Prince. Paul and Prince को तो देना पड़ेगा. 10% into 5,000 plus 5,000. This is very, very important. Students are making mistakes over here. 1,000. And now Roman 6. Estimated profit after interest on capital. Roman 4 minus Roman 5. 1,79,000. And this 1,79,000. See how many important points in this question. Unrecorded expenses, red pen adjustment. Interest on capital, red pen adjustment. But only to Paul and Prince. बेटा नानी याद आ जाएगी. इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है बाबा. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. बहुत डिफिकल्ट. Yes. But now I made it very simple for you. Please go through it. Don't give up. So बेटा डेट वाइज मोहम्मद रेहान जी, फिर डे वाइज कैलकुलेशन. बट आई वोंट आस्क यू सच क्वेश्चंस. ऐसा पार्टनर कभी 15 तारीख ये ऐसा ही मरेगा. 15 तारीख, 1 तारीख, 30 तारीख, 12 तारीख को नहीं मरेगा आईसीआई क्वेश्चंस में. नहीं तो डे वाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा. मंथ वाइज नहीं होएगा. फिर ये डिवाइड बाय 12 के बदले में डिवाइड बाय 365 आएगा. सर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कौन से ईयर के थे? हाँ अभी देखो. बेस्ट गुड क्वेश्चन सर. एबनॉर्मल प्रॉफिट. सी बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आर कैलकुलेशन नॉर्मल. इधर ये याद रखो. एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए नेवर कंसीडर एबनॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट्स. एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स के लिए नेवर कंसीडर कंसीडर नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल. कंसीडर फॉर दिस एस्टिमेटेड प्रॉफिट कंसीडर नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल. वेरी गुड. गुड क्वेश्चन बेटा. गुड क्वेश्चन. एंड फॉर गुडविल कैलकुलेशन, consider only normal profits. Good question. For abnormal, you don't consider for goodwill calculation. But when you are calculating P&L suspense based on the past profit, so you will consider normal plus abnormal. Okay. मस्त क्वेश्चन था सर. कहां से समझेगा? बाय प्रैक्टिस. For estimated profit, consider abnormal also. Yes, बरकतुल्ला जी. मजा आया ना? फिर मजा तो आना ही चाहिए. वर्किंग नोट 2, 1,79,000. 6 पॉइंट में एस्टिमेटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Estimated profit after interest on capital. See, once I will read for you. Profit for 2018. Before interest on capital, unrecorded expenses, insurance premium, adjusted profit. Then estimated profit for 2019 before interest on capital and interest on capital only for Paul and Prince. Estimated profit after interest on capital 1,79,000. That 1,79,000 into 2 by 4 into 9 by 12. 9 by 12. What is the profit? 67,125. Very, very important. 67,125. मजा आ गया सर. मजा आ गया. एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए एबनॉर्मल कंसीडर करेंगे. नॉर्मल गुडविल के लिए एबनॉर्मल नहीं कंसीडर करेंगे. सर क्या क्या कॉन्सेप्ट डालिए. अरे बाप रे सर कहां से फाइनल क्वेश्चन. यस, यू कैन एज्यूम इन दैट वे. बच्चे की जान लेगा ऐसा क्वेश्चन ही है. बहुत बढ़िया.
नेक्स्ट वन, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000. कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है? 20,000. 20,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. यस, मजा आ गया. 20,000 इंटू ईच शेयर. ईच शेयर इज, ये बहुत सिंपल था. 20,000 इंटू 2/4. यस, 10,000. चलो ये तो सिंपल था. इंश्योरेंस पॉलिसी. नाउ joint life policy and several life policy. Joint life policy, several life policy. Yes, working on 3 life policy. हो गया सर. आज के दिन में तो हम लोग ढेर हो गए. आज तो ऑस्ट्रेलिया हो गए हम लोग. समझ ही नहीं आ रहा है कहां से विराट कोहली इतना मार रहा है करके. यस, मजा आ गया. लाइफ पॉलिसीज. आज हाईएस्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग था. हाईएस्ट लेवल. यस, सार्थक सेठ, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. यही क्वेश्चन आया भी था शायद से. आप जो एक्सपेक्ट नहीं करते हो वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखना. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कंपटीशन, रुपीज, लाइफ पॉलिसी. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लास्ट पार्ट हो गया. जॉइंट लाइफ पॉलिसी. सी, ऑल पार्टनर्स विल गेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा. ऑल पार्टनर्स विल गेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा. सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितनी थी? 1 लाख. 1 लाख. 1 लाख गिवन. 1 लाख ना, इंटू 2/4. सी नहीं, फर्स्ट आई विल डू फॉर यू. गिवन 1 लाख. ओके, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख सबको मिलेगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, रेड पेन पॉइंट. सेवरल लाइफ पॉलिसी. प्लीज अंडरस्टैंड. सेवरल मीन्स इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीन्स पीटर भी, प्रिंस भी, एंड सॉरी पॉल पहले ना. पीटर, पॉल, प्रिंस. पीटर, पॉल, प्रिंस. सेवरल लाइफ पॉलिसी में पीटर का वो पूरा पैसा मिलेगा. पीटर मर गया ना, सेवरल लाइफ पॉलिसी में पीटर जो मरता है, ओके, हु डाइड विल गेट फुल अमाउंट. पीटर विल गेट फुल अमाउंट. पीटर विल गेट फुल अमाउंट. ओके, सो पॉलिसी अमाउंट. पीटर विल गेट पॉलिसी अमाउंट. व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट? 50,000. 50,000 पॉलिसी अमाउंट. And Paul and Prince will get surrender value because they are not died in several life policy. In several life policy, they are not dying, so they will get surrender value. What is surrender value? 50,000 into 15%. It's a 15%. Sorry, 30%. It's given in the question that surrender value is 30% of the face value. Okay. So 30% of the face value is a surrender value, that is 50,000. Face value means policy amount. Face value means policy amount. So this is a new concept. So who is not dying? Paul and Prince. They will get surrender value. What is surrender value? Policy amount का 30%. And who is dying? He will get full policy amount. तो ये पूरे फर्म को जाएगा. हाँ, several life policy and joint life policy is not getting to individual. They will get to, this amount will get to firms. Okay, तो फर्म को मिलेगा. इतना याद रखो. 15,000. So now tell me total amount received by firm for policy amount. Total amount received 1 plus 2, 1,80,000. Now this is a new concept. And then Peter's share 2/4 into Roman 3, 90,000. So what is the new concept? Several life policy. To whom it will get? This is partner, he will get full amount. And remaining partner, individual policy, ka surrender value they will get. Those who are not dying. Okay, got the concept? So this is the new concept. Several life policy, very, very important concept. Yes, any other question? Okay, sir, मजा आया ना? मजा आ गया सर, मजा आ गया. So what is the balance? 90,000. Sir, one more point you are not taking. Yes, 2 unrecorded expenses.
Unrecorded expenses. You have not considered. This is the trade paid adjustment. Unrecorded expenses. What is the unrecorded expenses in this question? That premium amount कितना था रे? 6,000. 6,000 पूरा लेंगे क्या? No, sir. His share. Sir, unrecorded expenses account debit. Okay, revaluation account को, sorry, partners capital account debit to recorded liability account. Unrecorded liability account. Revaluation जैसा ही है ना? So capital balance will come down. So 3,000. This is very important. And then finally, we are getting balance carried down. Now tell me what is balance carried down. Must question tha. Ek number 10 plus 20 plus 107 plus 67.125 plus 10 plus 90. So this is 3,04,125 minus 13,000. 291,125. मजा आ गया, बहुत बढ़िया. कैपिटल, करंट, गुडविल शेयर, P&L सस्पेंस, रिवैल्यूएशन, इंश्योरेंस पॉलिसी. क्या था सर ये क्वेश्चन? गुडविल कैलकुलेशन एक नंबर, देन P&L सस्पेंस एक नंबर, उसके बाद सेवरल लाइफ और जॉइंट लाइफ दोनों. सर इससे A+++ कैटेगरी क्वेश्चन है ये. तो क्या बनाया था सर? प्रैक्टिस करना, do proper practice. Thank God, finally we have completed this question. Yes, thank you so much. Now please try other questions. If you find it difficult, I will request हमारे प्रिया मैम को कि please give me one more session if required. If you find that remaining questions after solving this question, if you find other questions are very easy, yes, you can take a screenshot. You can take a screenshot, बेटा. Screenshot लेना आपका हक है. And see this question. Rectification questions we solved. Yes, you can take a screenshot. डेट के questions आप कर सकते हो. So remaining partners will get no joint life policy 1 लाख था बेटा सहजप्रीत कौर. इजी है पर टाइम तो लगेगा. 3, 4 2/4 क्यों नहीं दिया? दिया ना बेटा, किया ना गुडविल का शेयर 2/4 1,07,000 उसी से तो आया बेटा. गौरलिंग ध्यान किधर है बेटा तेरा? 5 नंबर. This is also A+ category. Please do it properly. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एवरेज था एंड बेस्ट क्वेश्चन टिल नाउ. आज तो आधे शहीद हो गए. आज सबको समझ में आया होगा क्या लेवल का प्रॉब्लम ऐसे पूछता है. मजा आ गया भाई. चलिए, so we will wait till your remaining question solving part, and tomorrow we are going to start with company accounts, my friends. Company accounts. धन्यवाद. Yes, I know these are very difficult questions, but still I'm giving you some time. I know these are difficulties level एक अभी highest level पे डेथ के question में, but बेटा if you can solve this question, other questions are really very easy. Now you will find admission, retirement और डेथ तो highest level का रहने ही वाला था. So आप लोग अभी हिमालय के चोटी पे पहुंच चुके हो तो डिफिकल्टी लेवल क्यों नहीं होगी. So this is all from my side. Thank you, and tomorrow we are going to start with company accounts. Thank you till that time. Thank you, sir.